यो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वाला वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोना टेक यू थ्रू माय फुल ब्लोन एंड बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी वेयर आई एम गोना शो यू क्या क्या नेसेसिटीज, व्हाट इंडिकेटर्स यू शुड यूज एंड द फोर मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर टू execute the strategy. And before we dive into this, please do not trust this strategy without backtesting it for yourself. If you want to do this strategy, first backtest it on an account, then trade it in the live markets using a paper trading account. Once you're confident enough on your risk, please try it on the real account. Do not take this strategy blindly from me because it might work for me but it might not work for you. It's on your trading psychology. So yeah, on this note, let's begin. So here you can see ये वाला chart है. It is the Ethereum chart right now. You can open any chart. It works on any chart. What are the four key points you should remember on a strategy? The first point is always enter on a cross of two EMAs. So if you guys see my chart, I have used three EMAs over here, right? Yeah, one is the 8 EMA, one is the 50 EMA, and one is the 200 EMA. The black one is the 200 EMA, green one is the 50 EMA, and the blue one is the 8 EMA. What was the rule number one? Always enter when 8 and 50 EMA have a crossover. So as you can see over here, they had a crossover. If you can see, it's a very tiny crossover, but they had a crossover. Here you can see ये वाला crossover. So if I enter the short over here, I will enter over here after the crossover. You should always enter when the candle is closed so that you can add a stop loss. Stop loss will be above the candle, slightly above the candle, and take profit. You can write it as long as you want. I mean, minimum this strategy can capture a 1:3 for you. Worst case, he'll capture a 1:2, but minimum I always target for 1:3. Okay, तो इधर आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं इस strategy को थोड़ा, if I played it a bit smart, I could have rided it all the way till here, जो कि होगा 1:6. ठीक है, तो ये एक है. तो अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 2 पे, जो कि है trade with the trend. What that means is if the price is below the 200-day moving average. Note my point. If the price is below the 200-day moving average, always take only shorts. Do not buy when the price is under the 200-day moving average because it is an anti-trend trade, a degen trade. Okay, and if the price is above the 200-day moving average, say for example, which the price has not been in a quite long time, over here you can see the price is above the 200-day moving average, which means you are only taking longs when the 200-day average, the price is above the 200-day average. Okay, so over here, random place on the chart. Okay, there's a random place on the chart now. Here if you see, here the price is, yeah, this is a perfect example. Okay, here here the price is under the 200-day moving average, right? And here the price is above the 200-day moving average, correct? Now over here if you see, what was my rule number 1? Always enter when there is a crossover of two EMAs. Here is it happening? Yes, you can see the 50 and 200 EMA are crossing over, so I'm entering the trade. 2. So is it against the trend? No, it is with the trend because it is under the 200 EMA average. I'm going to take a short. Stop loss above the candle eye, and you can see beautiful capture, beautiful riding of a trend. This will literally catch you 1:24. Okay, got it? This was under the 200 average. Now we are still under. Here you can see no crosses, no trades. Now over here if you see, the price has a crossover. Then it gave a big momentum candle, right? It gave a big momentum candle. अब क्या करूँगा? The price is above. Cross has already occurred a few candles before and it has a big move. What I'll do is I will enter the trade after the candle closes. My stop loss will be below the 200-day moving average, slightly below that, and I can write the trade for minimum of 1:3. My target will be minimum 1:3. I will not exit before that. You can see here 1:3 has been hit. Okay. In this strategy, I always aim for 1:3 and I try to keep my stop loss as tight as possible so that we can risk
the same amount but capture a bigger move, you know. इस स्ट्रैटेजी का गाइस अगर बैक टेस्ट इफ यू डू यू विल गेट टू नो कि इस स्ट्रैटेजी का विन रेट है 75%. एंड एक और एग्जांपल इधर दिख रहा है हमको कि प्राइस अबव द 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दिया फॉर बाय, सो विल टेक अ लॉन्ग ओवर हियर at the close candle, stop loss below the candle and take profit 1:3 minimum. easily 1:3 easily हिट होगा इसमें, तो 1:6 तक तो राइड हो जाएगा. ठीक है, तो आप लोगों को अब 2 रूल्स समझ आ गए. अब तीसरा रूल क्या है, नेवर रन बिहाइंड अ ट्रेड आफ्टर अ क्रॉसओवर. तो क्या इसका मतलब क्या है, नया ट्रेडर्स क्या होगा, they'll only hear the first and second rule. they'll mostly hear the rule number 1 कि क्रॉस आएगा तो ट्रेड ले ले. यहाँ पर क्रॉस आया, ट्रेड लिया इसने, थोड़ा सा नीचे क्या, बूम, स्टॉप लॉस हिट हो गया. क्यों, एंटी ट्रेंड ट्रेड. दूसरा वाला ट्रेड एग्जांपल, इधर प्राइस नीचे आता गया, नीचे, हाँ प्राइस इधर क्रॉस आउट दिया, नीचे गया, इधर तो ठीक है, हो गया, यू गॉट सम मनी. ठीक है, उसके बाद एक और ट्रेड देखते हैं. हाँ ये वाला, इधर आपने एंट्री इधर किया क्योंकि प्राइस तो क्रॉसओवर इधर दिया था, यू एंटर ओवर हियर, थोड़ा सा प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट, ब्रेक इवन प्रॉफिट, और बूम, स्टॉप लॉस हंटिंग स्टार्ट होगा. प्रॉफिट इट विल नेवर हिट योर टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना. तो नेवर रन बिहाइंड ट्रेड्स गाइस. मार्केट्स में ट्रेड्स मिलते हैं, एंडलेस अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको मार्केट में. आपको यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड ट्रेड्स, यू डोंट हैव टू कैप्चर ऑल द ट्रेड्स इन द मार्केट, यू विल गेट ट्रेड्स. मार्केट में बहुत सारा ऐसा अपॉर्चुनिटीज है जो देखो मार्केट में ना एक दिन में हज़ारों अपॉर्चुनिटीज आते हैं. आप लोग उस 1000 में एक अच्छा वाला ट्रेड ले लिया ना, तो आप लोग प्रॉफिटेबल हो जाओगे ट्रेडिंग में. ठीक है, ये था तीसरा पॉइंट. चौथा पॉइंट, इट इज अ बोनस पॉइंट. जब प्राइस ऊपर होता है एंड क्रॉसओवर देता है एंड आई नीड सम एडिशनल कॉन्फिडेंस कि हाँ ये प्राइस ऊपर ही जाएगा, व्हाट आई डू इज, से फॉर एग्जांपल इधर दिख रहा है आपको, ठीक है, प्राइस इधर क्रॉसओवर दिया था पर इट इज अबव द 200 मूविंग एवरेज. क्या, व्हाट विल आई डू, आई विल ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन फ्रॉम द recent parts of the market and I will wait for that trend line to break. हाँ, अब अगर आप इधर देखोगे, अब इधर क्रॉस दिया था पर मैंने एंट्री नहीं लिया बिकॉज ट्रेंड लाइन अभी भी ऊपर है एंड देन प्राइस इज अबव. आया नीचे, it made a fake breakout, invited all the sellers, trapped them, and then here again gave a crossover and then boom, short. Easy था ट्रेड, है ना. तो अगर मुझे एक और एडिशनल कॉन्फ्रेंस चाहिए या एक और A+ सेटअप, दिस इज एक्चुअली माई A+ सेटअप, व्हेन ये सब एक साथ हो जाए, मतलब इधर एक क्रॉसओवर आ गया, उसके बाद एक ब्रेक ऑफ और ट्रेंड लाइन इधर आ गया, तो इधर एंटर, स्टॉप लॉस उस क्रॉस. हाँ, अगर आप लोग ट्रेंड लाइन पे एंट्री दे रहे हो ना, तो मेक श्योर योर स्टॉप लॉस इज स्लाइटली बिलो द प्लेस वेयर द प्राइस had a 8 and 50 EMA क्रॉस ओवर. ठीक है, तो उधर रखूंगा तो भी 1:5 तो इजीली अचीव हो जाता. ठीक है, तो हाँ, ये था 4 रूल्स जो आपको यू शुड फॉलो दीज 4 रूल्स ताकि आप लोग इसको you should follow these 4 rules to use this in your trading as well. तो हाँ, यही था मेरा स्ट्रैटेजी. दिस इज अ गेम चेंजर गाइस. एंड आप लोगों को अगर एक चैलेंज देखना है मज़ेदार वाला, जिसमें आई विल ट्राई एंड अटेम्प्ट टू टर्न $1 to $1 million trading in these markets, then make sure you leave a note down below and I will read those comments guys. Make sure you leave a note down below. I will read them, and if I know that you people are interested, I will make that video as well. We'll start a full series on that where I'm gonna share all my trades, my psychology, my risk management, my account, and my live trading and all stuff. If you want live trading as well, make sure you leave a note down below and like the video, subscribe to the channel. We are on a road to hit the first 100 subscribers. So subscribe to the channel. I'm gonna meet you guys in the next video. Till then, peace out.